transpiration takes place in plants. In plants, the water required is absorbed by the roots from the soil with the help of root hairs by a process called osmosis. The water is further transported upwards through the stems to the leaves through xylem, which acts as a pipeline. Xylem cells have thick walls. Water then enters in mesophyll cell through stomata. Stomata are openings on the leaf surface through which transpiration takes place. The stomata are surrounded by guard cells which help the stomata to open and close. Transpiration takes place during daytime when the stomata are open. Transpiration is also done through lenticels, which are minute openings on the stem. Lenticels are less in number compared to stomata. Transpiration also takes place from the leaf surface. Leaves are covered by a waxy layer of cuticle, which is called cuticular transpiration. The cuticle actually helps the leaf to reduce the amount of transpiration taking place. So from all this, we can conclude that transpiration in plants can be done by three types. First, through stomata. Second, through lenticels. And third, from the leaf surface. Transpiration is very important to plants as the transpiration pull helps water in rising to the leaves against the force of gravity. As the rate of transpiration increases, so does the rate of absorption of water. If transpiration is more than absorption, the plant will lose its turgidity, and this will lead to drooping of leaves, stems and flowers. ट्रांसपायरेशन के मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँगी, वीडियो तो आपने इसको देख ली है कि इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो रूट से जो है वो वाटर है नीचे उसमें सॉइल में, प्लस हम कहते हैं जी सॉल्ट है, वो तमाम एब्जॉर्ब हो के रूट हेयर्स के थ्रू, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ रूट हेयर्स, और इसके थ्रू अगर आप देखते हैं तो पानी एब्जॉर्ब हो के हर हिस्से तक पहुँचता है, स्टेम, लीफ, और इसी तरह से अगर आप देखें तो पहुंचने के बाद हर हिस्से तक जाता है, और उसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज थ्रू द स्टोमेटा जो हम बात करते हैं नियर मौजूद होते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं क्यूटिकल जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है इसकी। फिर इसी तरह से हम बात करते हैं बाय जो है स्टोमेटा है, और स्टेम में जो है वो लेंटिकल्स होते हैं। इनके ज़रिए से अगर आप देखें तो जो है वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाना, अनब्रोकन कॉलम, इस अमल को, इस प्रोसेस को यहाँ पे जो है ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, और स्ट्रेट फॉर्म में जाने का जो प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहलाता है, और ये प्लांट्स को सर्वाइव करने के रहने के लिए ज़रूरी है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बुक का पेज नंबर जो 6 है उसमें ये दिया हुआ है, और इसके अब जो है हम इसको वीडियो में भी आपने देखा, और इसके हिसाब से अगर आप देखते हैं जो फैक्टर्स हैं वो भी उसने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए कि जो फैक्टर्स हैं वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे कैसे अफेक्ट करते हैं, और उसमें अगर आप देखें फैक्टर्स जो दिए हुए हैं, और उसमें जो है हम कहते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट और एटमॉस्फेयर। ये फैक्टर से पहले मैं चाहूँगी कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो हम उसको कैलकुलेट करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ पोटोमीटर के उसके ज़रिए से उसको नापते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो दिन के टाइम जो है वो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर जो हम बात करते हैं नाइट, उनमें अगर आप देखते हैं तो ये प्रोसेस आपको सारा समझ में आएगा वीडियो के बाद। देन वी विल डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन।
इसको ज़रा देख लें हम, उसके बाद जो है फिर मैं आपको बात करती हूँ। जो वाली वीडियो देखी होगी और इसमें फैक्टर्स का भी बताया है। और इसमें अगर आप देखते हैं जो फैक्टर है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी टेम्परेचर के, और विंड जो है वो किस तरह से इसमें अफेक्ट करती है। आपको जो ग्राफ है उसके ज़रिए से समझ में आ रहा है कि इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द विंड, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कि पहले इंक्रीज होगी और बाद में डिक्रीज होगी। इसी तरह से अगर आप देखते हैं विंड का, और इसी तरह से हम कहते हैं जो ह्यूमिडिटी है, वो अगर आप देखें तो वो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो जब ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से ग्राफ ऊपर जा रहा है, और ह्यूमिडिटी अगर आप देखते हैं तो वो कम होगी, उस हिसाब से ग्राफ नीचे जा रहा है। दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। फिर थर्ड नंबर पे लाइट, के दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है, और बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो जो हम कहते हैं रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगा, और रात के टाइम अगर आप देखते हैं तो कम होगा। इसी तरह से अगर आप देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ये भी वो बता रहा है, और बहुत डीप उसमें वीडियो में बताया हुआ है कि जो इसमें प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या करता है कि अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो कंप्लीट तौर पे रुक जाएगा। बच्चों, मैंने ये तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं, पेज नंबर 7 और 8 पे दिया हुआ है। Potometer, and you probably have seen something like this in school or in your classroom, or you could even, make a simple version of these with some tubing and some test tubes or something like that. So the rate of transpiration is hard to measure directly. And remember that transpiration is the movement of water, the inevitably sad movement of water through the plants, because there are holes in the leaves that need to allow gas to come in for photosynthesis. So the water ends up leaving and the water can move up. Now, if you have this kind of entire kind of blocked off stream of water with no air bubbles trapped in there, the water will continuously move up as it evaporates from the leaves. That's the basis of this entire thing. And if you need to move the bubble back around, in some potometers there's a little reservoir here that you can open up to move a bubble around. You could just use the end of the water here and actually use that and measure the movement of that, or you can introduce a bubble into it and then measure the movement of the bubble. It doesn't matter. There are many different ways that you can do this, but this is one of the standard methods that you should understand how to use. It's called a potometer. So skip to the ending of the movie and you end up with the results that are already here, but that's okay. If you're doing a transpiration experiment, you're probably already sure, or what the expected results are supposed to be. So it might not be very exciting or rewarding, but one of the ways that science is approached is to make sure that we are double checking and constantly reconfirming different types of hypotheses and theories that are out there. And so when you get your results and they don't match up, well, maybe you figured out something new, or maybe it's time to evaluate your actual approach. But nevertheless, when you're done and you've compiled your results, you need to compare them with